Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today the topic of my video is the bony scapula. इस वीडियो में मैं स्कैपुला की एनाटॉमिकल पोजीशन, साइड डिटर्मिनेशन, उसके बोनी लैंडमार्क्स और कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस के बारे में बताऊंगी. Scapula is actually a flat bone that lies posterior to the thoracic cage. Along with the humerus of the upper limb, it forms the pectoral or the shoulder girdle. स्कैपुला की साइट को डिटर्मिन करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी सर्फेसेस और बॉर्डर्स के बारे में जानना होगा. The scapula, as we already know, it is a flat bone. It has two surfaces. This is the posterior surface of the scapula. Posterior surface पे हमें कुछ processes नज़र आते हैं जिनको हम at the end discuss करेंगे. And this is the anterior surface of the scapula. The anterior surface actually faces the thoracic or the rib cage. Therefore, it is also known as the costal surface. Scapula has three borders. This is the lateral border of the scapula. This is the medial border of the scapula. And this is the superior border of the scapula. It has two angles. This is the inferior angle and this is the superior angle of the scapula. It has three processes. This is the acromion process. Acromion process actually articulates with the lateral end of the clavicle and it forms the acromioclavicular joint. This is the spinous process of the scapula. These two processes actually lie on the posterior surface of the scapula. Coming towards the anterior aspect of the scapula, we have a smaller process. This process is known as the coracoid process. The posterior surface of the scapula, due to the presence of the spinous process, has been divided into two fossae or two surfaces. The surface that lies superior to the spinous process is known as the supraspinous fossa. It gives attachment to a muscle, that is the supraspinatus muscle. The surface that lies inferior to the spinous process of the scapula is known as the infraspinous fossa, and the muscle that is attached here is known as the infraspinatus muscle. अगर हम सुप्रास्पाइनस सर्फेस में या सुप्रास्पाइनस फोसा के सुपीरियरली देखें तो जैसा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस इज द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला. Just medially to the coracoid process, we have a notch. This notch is actually known as the suprascapular notch. इस suprascapular notch में से हमारे पास suprascapular nerve pass करती है. Now coming towards the anterior surface of the scapula, इस surface को हम costal surface भी कहते हैं because this surface actually faces the thoracic or the rib cage. इसका दूसरा नाम है subscapular fossa और इस पे जो मसल अटैच होता है उसको हम subscapularis कहते हैं. These are the specifications of the lateral border of the scapula. This fossa you can see on the lateral aspect of the scapula. This is known as the glenoid fossa. It is actually responsible for the formation of the glenohumeral joint or the shoulder joint. इस फोसा पे अगर हम गौर करें तो हमें यहाँ पे छोटे छोटे दो ट्यूबर्कल्स नज़र आते हैं. एक का नाम है सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबर्कल और दूसरे का नाम है इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबर्कल. Supraglenoid tubercle actually gives the site of attachment for the long head of biceps, whereas the infraglenoid tubercle gives the site of attachment for the long head of the triceps muscle. Coracoid process जो है, it actually gives the attachment sites for various muscles, such as the pectoralis minor, the short head of biceps, and the coracobrachialis. इन स्ट्रक्चर्स को और बोनी लैंडमार्क्स को जानने के बाद नाउ इट इज़ ईजी फॉर अस टू डिटर्मिन द साइड ऑफ द स्कैपुला. तो साइड डिटर्मिन करने के लिए हमें स्कैपुला को इस तरह पकड़ना होगा कि इसका जो ग्लिनॉइड फोसा या ग्लिनॉइड कैविटी वाला बॉर्डर है वो हमारे लैटरली लाई करे, जबकि ये जो फ्लैट और स्ट्रेट बॉर्डर है ये मीडियली लाई करे. तो इन दिस वे दिस इज़ एक्चुअली द राइट साइडेड स्कैपुला.